Okay, let's start. I think everyone has joined. Online students, give me a thumbs up if you can hear me and see me. Okay, so yesterday we talked about political theory, right? We said political theory can be considered across the time domain, whereby we can say classical political theory is of the ancient times, then we have the medieval political theory, modern political theory, and then we have the contemporary political theory. It will overlap, but see, generally modern is representing a break from the previous times. For example, here some ideas are the dominant ideas, and now there is a break, so we say modern political theory starts. Now this modern ideas are continuing, but in the last 50-70 years some new ideas have come up which represent a break. So many people believe that this is representing a break. If we consider from that perspective, then my next ideas will be my next era, or the next, I would say, in the evolution, my next progression. Now when we talk about post-modernism, I told you that modernity has ended and after modernity phase has started, which many believe has already started. But there is a terminology of contemporary political theory, which means nowadays what is going on. Nowadays means 50-100 years. So this modern political theory is something which starts in the 15th century. Contemporary is what is going on today, in which we will see whatever ideas came up in modern political theory's time, these are the ideas through which we govern our life today also. But is this the only part, or something else has also come up? There we say, what's contemporary? What is today's new ideas? Today's new ideas versus today's applicable ideas are two different things. Today's new ideas will represent the break, but today's ideas, they will be the new ones plus the ones which are being practically implemented also. For example, if we say liberalism is continuing, but somebody will talk about post-liberalism also. When we talk about that, we will say it is the contemporary political theory in the sense that there is a break. But when we talk about liberalism, we will still call it modern, but we will say this is not of today's time, this is something which started way back. So modern political theory is continuing. There is a break which has started coming. That break will represent my contemporary political theory, first interpretation. Second, contemporary political theory is what is going on in the last 50-60 years. Contemporary political theory may have some characteristics which will be different from modern political theory. Some it will continue, some it will bring new. Maybe in the next 100 or 200 years we will be able to say that okay, now a new phase has begun, if the social life changes as per those ideas. But the moment I say contemporary political theory, online students, am I audible? Kindly give me a confirmation. कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है. Am I audible? Are we live? तो जैसे ही मैं कहूंगा वर्ड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए अभी 50-60 साल में क्या बातें हो रही है. वो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी है. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्या वो मॉडर्न जैसी दिखती है? क्या वो क्लासिकल जैसी दिखती है? क्या वो ऑल टुगेदर नहीं है? तो मैं कहूंगा तब हम बात करेंगे कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी की. उसी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो एब्सोल्युटली ब्रेक दिखा देते हैं, बिल्कुल ही ब्रेक, पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया. जैसे यहां आई चेंज द एंटायर सिस्टम इटसेल्फ, वहां पे भी कुछ आइडियाज ऐसे होंगे. कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी will have an element which will represent a sharp break, but the point is it is too early to say that is it a sharp break or not. आइडिया आ गया है, जब वो इंप्लीमेंट होगा उसके बेसिस पर we'll create a state or maybe we'll implement it in society. For example, see, let's say socialism came in 19th century. Okay, liberalism as a phenomena is a phenomena of 17th and 18th century, whereas socialism came in 19th century. Socialism 1850s, that is where the main ideas of socialism came. Liberalism came, socialism came. Liberalism came
it got implemented in Europe. Socialism came, it started getting implemented in the best possible manner by the Russian Revolution. So now in Russian Revolution, what we have done, those ideas which were already there since last 50-60 years, they got implemented for the first time. And then we saw Soviet Union as a entity which governed itself as per the ideas of socialism. So what happened? There is a idea coming up, socialism, but that idea is only in books. That idea is only amongst people, they are discussing, they are forming organizations. But are you running the entire country with those ideas? That only happened with Russian Revolution. So now the Soviet state is being implemented on certain set of ideas, and now it became my system. Earlier it was only in the domain of academics. For example, postmodernism as of now is only in the domain of academics. How will I take it forward and implement it? As of now, the study is very in the nascent stage. But the moment you call it post-modernism, that means you are saying it is after modernity. Post. That means those ideas are representing a break from the kind of ideas which existed during this time. Now those ideas will come, they will be debated, they will be talked about. The moment you create a system out of that, that is the time when we can conclusively say that yes, the theory has now been implemented and now I can see the practical relevance of it also, and now my social life is also organized around that idea. Before that, it is all in the realm of ideas without practice. Okay, so we'll not say socialism is a contemporary phenomena. Socialism as an ideology is a modern phenomena. Socialism as practice is a modern phenomena. But is it relevant today? What's the relevance of Soviet, or what's the relevance of, let's say, socialism in the last 50 odd years? We'll say it is losing relevance. Recently UPSC asked a question few years back, socialism may come back in the form of anti-capitalism in 21st century. They wanted you to think on the terms that will socialism come back. Now why are they saying, we'll get to that part later on, but as of now, the moment we say contemporary political theory, socialism is not contemporary political theory. It's since 1850s. It has developed over a period of time, but what is contemporary political theory? The works which are done probably after 1950s. We'll put them into contemporary political theory, or the works which have a certain distinction from the previous works in terms of how they move forward, what's their ideological frameworks, what's the systems which they are using. जैसे अभी हम सिस्टम यूज करेंगे कि इंडिविजुअल है, उसके राइट्स है, उसकी लिबर्टीज है, सोसाइटी की एक कंसेप्शन है, स्टेट की एक कंसेप्शन है, और यहाँ पर जो इकोनॉमी और सोशल लाइफ चलेगी, सबकी एजम्पशंस के ऊपर एक सिस्टम बनाएंगे. लिबरलिज्म एक बनाएगा सिस्टम, सोशलिज्म एक सिस्टम बनाएगा, मार्क्सिज्म एक और बना देगा. पहले कुछ एजम्पशंस लेगा. मैं कह रहा हूं अभी एजम्पशंस जो चेंज हुई हैं वो भी कंटेम्पररी पॉलिटिकल थ्योरी में आएंगी. ये समझ रहे हो? एज ऑफ नाउ see, contemporary generally means that what is relevant as of today. It could be ancient, could be modern. Those are characteristics. What you are saying is characteristics. That does the contemporary political theory. For example, I told you that there is a normative element, there is a, let's say, empirical element. This political theory was heavy in what? Normative component. This political theory was heavy in empirical component. Now we'll come contemporary. It has this also, it has this also. When contemporary came, what we did was, we brought back norms. They said, oh, you are going back to that. No, they said, no, we are not going back to, we are integrating both of them, and now by integrating both of them, we'll create new systems. We'll create new theories. Absolutely, absolutely. If the, okay.
No, we can say contemporary because contemporary also has an element of time associated with it. That's something which is going on nowadays. Contemporary means something which is happening in the recent 50-60 years. It has an element of time also. It has an element of change also. So from that perspective of time, for example, feminism. Feminism is a contemporary idea. Why? It came up only into being after 1950s. So it's a relatively new idea. A lot has to be done on that. Contemporary political theory, feminism, because of the time frame. It is contemporary because of the way in which it focuses at the social life. That has also new components. In both sense, it is contemporary. Absolutely, absolutely. Idea is idea. Same idea can exist in ancient times, same idea can come today also. Same idea can come, but you need an idea, and then on that idea you build a theory. The idea that man has rights. This idea was the main idea of liberalism. We are not saying this idea did not come earlier, but this did not become a system. Between modern, two things. When we have to differentiate between ancient political theory, modern political theory, contemporary political theory, what I'll see? Time frame. Ancient, as the name suggests, it belongs to those times. Second, what was the characteristic of political theory here? There were certain characteristics of political theory. We called them as classical political theory. There are certain characteristics of political theory here. We'll call, because of those characteristics, a political theory to be modern political theory. Similarly, there will be certain characteristics here, because of which we'll also call it contemporary political theory. I'll make you right. For example, they used to say that state comes from God. They are saying no, it does not. How do older political theories view state, and how do modern political theories view state? From that, we'll say it has modern components or this has classical components. See, when a political theory is being written, the idea is somebody is going to use some assumptions, and on the basis of that they are going to create a theory. We will do the analysis on the basis of two factors. One, when did it come? Time frame. Second, what are its characteristics? On that basis, we'll say it has modern characteristics or it has classical characteristics. But since it came after 15th century, we'll call it a modern political theory, because the way in which it has been built, the assumptions which are, there are similar assumptions for all of them. Individual is important. I say individual is important. Liberalism will say, socialism will say, Marxism will say, feminism will say. They are using an idea that individual is the important entity or my starting point of analysis. But the same thing was not said by Plato. Plato said, first comes state, then will come individual. Now, if you will see all the political theories after the 15th century AD, they have taken individual to be the starting point of reference. Because they are all taking this is a characteristic, and because they are coming after 15th century. Modern political theory. There will be characteristics, there will be a time frame. Okay, both factors are associated when we distinguish or categorize a particular theory. Some theory is written here, Rawls' theory of justice. It is heavy in normative component, which is a part of this. But that's a characteristic. We'll say Rawls' theory, which is written in contemporary times, it is written very recently, it has heavy normative bias, which makes this theory heavily value laden, and hence it comes very close to the classical political theory. That is how we'll put it. But it is contemporary because it has come recently. So because of my time frame, I will call a particular theory as modern or contemporary or ancient. Later on, when I go into the deeper analysis, I will say this particular theory has modern characteristics, this particular theory has classical characteristics, or there are some new dimensions of looking at things. They are not classified anywhere. They are not modern, they are not classical, they are new things. Power क्या होती है?
You know what is power? Power control. Okay. Generally, how have we understood power is that power is something which is a characteristic of an individual. Individual has power, or power is with state. If Dawood Ibrahim has a gun, he has power. State has police, state has power. Do you have power? Your father has power over you. He can have power over you. You may be having a power over your sibling, younger sibling. Ability to get your way, even if they don't want to do it, or getting obedience, either voluntarily or involuntarily. That is how we define power. A postmodernist will call Michel Foucault. Michel Foucault will say you are all looking at power in a very wrong manner. He'll say power, knowledge is power. The one who creates knowledge, that person yields power. Knowledge, who is creating knowledge? What kind of a knowledge? He says the moment the study of psychiatry came into being, the people who were insane, पागल लोग, साइकेट्रिस्ट आए, उन्होंने कहा ये पागल है तो इनको क्या करो, असाइलम में डाल दो. उससे पहले पागल लोग समाज का पार्ट थे. उसके बाद उन्होंने कहा कि ये पागल है, इनको रिफॉर्म करने के लिए असाइलम में डाल दो. हम ये नहीं कह रहे कि सही है या गलत, हम ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एक नॉलेज बन गई साइकेट्री की, नई नॉलेज है. मेडिसिन की नॉलेज पूरी की पूरी नहीं है. एलोपैथी, पेट खराब होता है, कौन सी गोली लेते हो? डोलो नहीं, वो तो बुखार में लेते हैं. एलोपैथी क्या कहती है? बॉडी में सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टरी सिस्टम, अलग अलग सिस्टम्स हैं, उनकी पूरी फंक्शनिंग को पढ़ती है और उसके बाद एक पूरी स्टडी करती है. ये एक पूरा का पूरा नॉलेज है जो आया तो उसके बाद से हमें फायदा हुआ. सिमिलरली साइकेट्री एक पूरी की पूरी नॉलेज है. जब वो आई तो वो लोग, उनके लिए क्या हुआ, जिनके पास ये पावर थी, उन्होंने समाज में क्या कहा, इनको असाइलम में डालो. मिशेल फोको कह रहा है दिस इज पावर. नॉलेज से पावर जनरेट होती है कहता, और कहता नॉलेज हर जगह है. शायद तुम्हारे पिताजी ने कभी कहा हो नॉलेज इज पावर. तुम्हें समझ में आता है जिसके पास नॉलेज है. अब मेरे पास नॉलेज है, तुम बैठे हो ना, सुन रहे हो ना मेरी बात. एक्सरसाइज ऑफ पावर हो रहा है. मिशेल फोको की पूरी अंडरस्टैंडिंग ही डिफरेंट है. हमने आज तक पावर को ऐसे नहीं देखा. कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी कहां डालूं? एंशियंट में भी नहीं आएगी, मॉडर्न में भी नहीं आएगी, क्योंकि सोचने का तरीका ही अलग है. कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी कब आई? अभी 70 साल भी नहीं हुए. तो मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे भी हो सकते हैं कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी के. बट कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में जब मैं सिर्फ टाइम फ्रेम देखता हूं, then I see that okay, there is a theory called Rawls theory of justice. That Rawls theory of justice has somehow brought back a heavy normative bias which was in the ancient political theory. Heavy normative, norms मतलब prescription, सही गलत, Plato, Aristotle, they are talking about this. Modern times में जब आएंगे वो इतनी बात नहीं करते इसकी. But Rawls brings back those ideas. Rawls theory, we will say, is a contemporary political theory which has many characteristics of classical political theory. Ideas have been taken from there. The overall bent of the theory is heavily normative in nature. So, classical political theory के characteristics है. But because अभी आई है तो उसको classify करेंगे contemporary political theory में. Two elements are there. Again, one is the time element, the second is the characteristics element. Yes. See, when we talk about the classical political theory, it starts developing during this time. The first works were done during this time. Then over a period of this time, number of works are done. And then these works which were done, the entire life were organized on these works till the 15th century AD. We changed the way
after 15th century AD. So medieval times and ancient times, you have classical political theory. Yes. Now, different books, we don't have this clear distinction in political science as you may have in history. Even in history, I would say that if you say when does the medieval time start, some will say post Guptas, some will say okay with the Bhakti Sufi rise, and some will say okay with the invasion of Muslims in India, that is when it starts. So we don't have those kinds of clear cut dates as to when we can say okay this is starting. We have broad themes around dates that okay this is the time when in society these kinds of discussions started happening. So after 15th century AD, what we see is a lot of discussions going on, and slowly and steadily number of works are done in fields of art, literature, then subjects like economics, sociology, they all started coming up. इससे पहले ये सब्जेक्ट ही नहीं होते थे, ये सब मॉडर्न टाइम्स के सब्जेक्ट्स हैं. सोशियोलॉजी का ऑप्शनल होगा ना तुम्हारे दोस्त का, पूछना कब राइज हुआ. पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल फिलॉसफी, लॉ, हिस्ट्री, ये इस समय से पढ़े जाते हैं. इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ये सब यहाँ पर आकर स्टडीज बनी. मेडिसिन न्यू स्टडी है पूरी की पूरी. तो इस टाइम पर कुछ आइडियाज आ गए, वो आइडियाज के बेसिस पर पूरा सोशल सिस्टम बना दिया. वैसा ही सिस्टम यहां तक चलता रहा. उसके बाद हमने न्यू आइडियाज को इनकॉर्पोरेट किया, न्यू सिस्टम बनाया, जो आज की डेट में भी चल रहा है. कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी अब उसको भी क्या करेगी, इवैल्यूएट करेगी, उसमें गलती निकालेगी, उसके लिए कुछ नया सजेस्ट करेगी. ये एवोल्यूशन हमेशा चलता रहेगा. विल कीप ऑन मूविंग इन दिस डायरेक्शन to make better and better systems. When liberalism came, and later on liberalism का सबसे बड़ा opponent है socialism या marxism. ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे सोशलिज्म मार्क्सिज्म में. और जब सोवियत 1991 में टूट गया तो उस टाइम पता है क्या बोला, लिबरलिज्म हैज वॉन. क्या पर क्या जीता, द बैटल एज टू व्हाट इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए क्या लिबरलिज्म बेटर है, सोशलिज्म बेटर है, क्या बेटर है. जैसे ही सोवियत टूटा, कहा लिबरलिज्म जीत गया. वो बात और है, हम उसको भी फिर आगे जाकर क्वेश्चन करेंगे. बट हमें क्या देखना है, बेस्ट सिस्टम. सोशल सोसाइटी में कॉन्ट्राडिक्शंस चलती रहेंगी. दोज कॉन्ट्राडिक्शंस विल कॉन्स्टेंटली चैलेंज द एस्टैब्लिश्ड सिस्टम्स. आई टोल्ड यू यस्टरडे, जो भी डिसएडवांटेजियस सिचुएशन में होगा, एनीवन हु इज इन द डिसएडवांटेजियस सिचुएशन, दे विल ट्राई टू चेंज द सिस्टम, एंड दिस वर्क दे विल कीप ऑन डूइंग. आफ्टर इंडिपेंडेंस, द दलित assertion is coming. They are able to organize themselves into political parties. Now they are asserting themselves. They have political power. Why? They will do it till the time their social status improves. But at all points of time, you will see somebody will enjoy an advantageous position, some group or some individuals will be in a disadvantageous situation. So this fight is going to keep on happening. Welfare state is a product of the socialistic ideas. बिल्कुल. चलो आगे चले. Fine. Now let's start with today. Before we start with things, I want to give you some notes. So make a subheading political theory and take down some notes, and then we'll start with liberalism. Right. Write political theory and then write. We'll try to define something, some very basic things first. Right. The term political refers to something that is public. The term political refers to something that is public as opposed to private
or something that is as opposed to private or something that is applicable to a limited number of persons. That is applicable to a limited number of persons. Continue. Certain functions such as national defense, after full stop, certain functions such as national defense, internal order, comma, dispensing of justice, are the primary responsibility of political institutions, based on the grounds that the ends served by these functions are beneficial to all members of the community. Full stop. The word political comes from the word polis, which referred to the ancient Greek cities, एंशियंट ग्रीस के बारे में सुना है कभी? कैसा होता था? बहुत ग्रीस से कोई आया था चलकर भारत तक, ग्रीस से चलकर आया था, लड़ाई वड़ाई करके भारत तक पहुंचा था कोई. अलेक्जेंडर. कहां से आया था अलेक्जेंडर? वहीं से आया था. ग्रीस इज कंसिडर्ड टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. ग्रीस से स्टार्ट होता है. ग्रीस में सिटी स्टेट्स होती थी. These small city states, they were called as polis, city states. Okay, city state समझते हो क्या होता है? City state, very interesting. City state, we'll relate it to the present times. City state, small area that has characteristics of state. Nowadays, how do we define state? You know how do we define state? If I say India is a nation state, US is a nation state, Pakistan is a nation state, how do we define it? What is this nation state? Any idea? See, when I talk about nation state, you want to answer? Anyone? State. Okay, we'll talk about it. Wait. First of all, state is a territorial idea, whereas nation, it's a psychological idea. Are we a nation? Moderates were saying India is a nation in making. Are we one? That's the basic idea. Ambedkar said we have a huge challenge. He's talking in the Constituent Assembly and he's saying we have a huge challenge. Caste divides India.
how will we become one, which is Indians, and lead this entire country towards progress? He says caste is going to be a big hurdle. This is psychological unity. Casteism, communalism, regionalism, linguism, all are hurdles to achieving this psychological unity that we are one. Mohit is saying, very good, Singapore or Vatican City, very good Mohit. यहां से आता है नेशन का आइडिया. आज के समय क्या होता है, नेशन स्टेट को साथ में बोला जाता है. ये जो एक है, इन्होंने क्या किया, एक टेरिटरी भी बना ली अपनी, और अब हम बन गए नेशन स्टेट. इस टेरिटरी में स्टेट के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. When we talk about state, state has 4 characteristics. One is it should have a territory. Second is this territory should have population. Third is this population should be governed by a government. And fourth is this government has to be sovereign. This makes a state. Whether all 4 things are available, then we can call something as a state. Stay with me. There is a particular group by the name of Kurds. Kurds. They are spread across Turkey, Syria and Iraq. Some members are, most of them are in Turkey. Kurds community, what are they saying? We need Kurdistan. We need Kurdistan. What is Kurdistan? Kurdistan is, we need a territory for ourselves. Why? Because we are already one. And now then we'll become a nation state. एक और कंट्री बन जाएगी कुर्दिस्तान नाम की. पर वो बनने के लिए ये 2 चीजें होती हैं. One, you need to have a feeling of oneness. Some will say India is not a nation. Anti-national तो नहीं हो. India is not a nation. Nation ही नहीं है. मतलब सब एक दूसरे को भाई नहीं समझते. सब एक दूसरे को, सब क्या कहते हैं, मैं हिंदू, तुम मुसलमान, मैं अपर कास्ट, तुम लोअर कास्ट, मैं बंगाली, तुम पंजाबी. ये सब चीजें डिवाइड करके रखती हैं. The constitution makers knew this fact. That is why they provided for single citizenship in India. Otherwise, if you go and look at US is a federal country. We are a federal country, but we have single citizenship. They have dual citizenship. Federal countries have dual citizenship. We, despite being a federal country, have single citizenship because of the fact that we want to say you are only Indian. The moment I say you are Indian and you are a Bihari, if you come from Bihar, 2 allegiances, one allegiance to government of India, one allegiance to your own government. The idea was this will further divide us, and that is why they said okay, one citizenship. Kurds are saying we are one, we are residing here, we are one, all we need is a territory. Kurds are saying we are a nation but we are not a state. The moment they get a territory, their people will come, they will form their government and the government will say we are sovereign and now क्या करो हमें admit us to UN. हम भी उस गोल चक्कर पर आकर बैठेंगे and we'll represent the Kurds. Just like India is representing Indians and USA is representing Americans. Just like that we'll also do so. Palestinians are also saying the same thing. We'll also represent the Palestinians. That is what the Palestinian Liberation Organization, PLO नाम की एंटिटी है, वो कहती है हमें स्टेट मानो. ये होती है नेशन स्टेट. आज की डेट में सारी कंट्रीज ये हैं. पुराने समय में सिटी स्टेट्स होती थी, छोटी छोटी सिटी और अपने आप में सॉवरन. छोटी सिटी, उनका पॉपुलेशन है, उनके पास टेरिटरी है, वो अपने आप को सॉवरन मानती हैं
अपनी सरकार बनाकर चलाती हैं, जिसमें एक थी एथेंस और एक थी स्पार्टा, और इनकी थी लड़ाई। इस लड़ाई में एथेंस हार गई, जिसका दुख सबसे ज्यादा किसको लगा? प्लेटो को। और वहां से उसने स्टार्ट की अपनी पॉलिटिकल थ्योरी कि मेरा देश हार कैसे गया, गलती क्या थी ये तो देखूं। पूरी की पूरी पॉलिटिकल थ्योरी प्लेटो की किसके ऊपर है? आई नीड टू क्रिएट अ बेस्ट पॉसिबल स्टेट, सो दैट वो क्यों आई थी? हार गए थे। उस समय जो छोटी छोटी सिटी स्टेट्स होती हैं, जिनका बेस्ट एग्जांपल आज की डेट में, मोहित इज सेइंग वेरी गुड, आज की डेट में द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिटी स्टेट कैन बी वेटिकन सिटी और सिंगापुर। ये छोटी छोटी जगहें जो अपने आप को सॉवरेन कहती हैं, उनकी सरकारें हैं, उनके पास टेरिटरी है, ये आज की डेट में सिटी स्टेट का एग्जांपल मान सकते हो। तो वहां छोटी छोटी सिटीज होती थी, और यहां पे वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी डेवलप हुई इन द वर्क्स ऑफ फर्स्ट प्लेटो एंड देन एरिस्टोटल। प्लेटो बिलोंग टू एथेंस एंड एथेंस लॉस्ट द वॉर। वहां से सारा स्टार्ट हुआ था गेम। तो ये वर्ड जो है ना, पोलिस, पोलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट, और पोलिस से हम डिराइव करते हैं पॉलिटिकल, जिसका मतलब है व्हेन वी डील विद एंटायर पब्लिक डोमेन, दैट इज वेयर वी विल से इट इज पॉलिटिकल। द मोमेंट वी डील विद प्राइवेट डोमेन, वी विल नॉट कॉल इट पॉलिटिकल। जैसे ही बाहर निकलोगे घर से, पूरी कम्युनिटी के लिए क्या करना है? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं। यू हैव रिटन फंक्शंस लाइक नेशनल डिफेंस, सबके लिए है। फंक्शंस लाइक इंटरनल ऑर्डर, फंक्शंस लाइक डिस्पेंसिंग जस्टिस, इट इज फॉर एवरीवन। पॉलिटिकल का मतलब समथिंग विच रिलेट्स टू पब्लिक डोमेन, समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू प्राइवेट डोमेन। आता वहां से है वर्ड, पॉलिटिकल वर्ड आता है पोलिस से। पोलिस सिटी स्टेट्स थी, ठीक है। आगे लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ। Various political scholars have discussed the nature of political theory. Various political scholars have discussed the nature of political theory full stop. For George Catlin, spellings are written on the board. For George Catlin, the political theory can be divided into, for George Catlin, the political theory can be divided into political science and political philosophy. Can be divided into political science and political philosophy. Full stop. For Andrew Hacker, comma, every political scientist plays a double role. Every political scientist plays a double role. He is part scientist and part philosopher. He is part scientist and part philosopher. It means the philosophical parts of a theory, are influenced by the facts of political life. Are influenced by the facts of political
life. Full stop. For him, continue after full stop. For him, who is him? Andrew Hacker. For him, the best political philosophers. For him, the best political philosophers. अगर क्लास में नींद आ जाए, अगर आ जाए, क्या पता आ जाए, कभी आ जाए, तो जाकर मुंह धो आना, ठीक है। अगर आ जाए, चाय चाहिए हो तो ले आना, मेरे लिए भी ले आना, ठीक है। अगर एक टम्बलर लेकर आना है जिसमें अपनी चाय कॉफ़ी लेकर आनी है, इन्वेस्ट इन दैट, खरीद लो, कोई हर्ज नहीं है, ताकि 2 घंटे यहाँ पर बैठे रहना, मेंटली भी, ठीक है। हम चाहते हैं इंटरेक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा दे, तुम्हारा बैठे रहना बहुत ज़रूरी है। आई अंडरस्टैंड तुम्हारी सुबह की क्लास भी हो सकता है हो, मे बी इट इज़ पॉसिबल कि आप बहुत लंबा ट्रैवल करके आ रहे हो, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, बट अगर ऐसा होता है तो इन्वेस्ट इन अ गुड बॉटल, इन्वेस्ट इन अ गुड टम्बलर, पानी साथ रखो, पानी में ग्लूकोन डी डाल के रखो, टम्बलर लेकर आओ, उसमें अपनी चाय लेकर आओ, कॉफ़ी लेकर आओ, व्हाटएवर यू वांट, नॉट अ प्रॉब्लम, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम यू ड्रिंकिंग टी इन द क्लास, नॉट एट ऑल, बस अटेंटिव रहना, सुनते रहना। आगे चलो। For him, the best political philosophers have always been, for him, the best political philosophers have always been aware of the existing realities, have always been aware of the existing realities before they could provide their theories, before they could provide their theories. Next paragraph. While political science is essentially empirical and focused on description, while political science is essentially empirical and focused on description, comma, the political philosophy is normative, political philosophy is normative and prescriptive, full stop. While political science deals with what is, write what is in inverted commas, while political science deals with what is, political philosophy deals with what ought to be, what ought to be. For example, a political scientist, may examine, the democratic processes at work, comma, a political philosopher is interested in clarifying
A political philosopher is interested in clarifying the meaning of democracy. The meaning of democracy. Now, I am going to make you write an example which will make sense to you probably at a later stage, but you write it here. Right? Example, elitist theory of democracy. Example, elitist theory of democracy elitist theory of democracy is empirical as it analyzes the working of democracy in the developed world, as it analyzes the working of democracy in the developed world, full stop. It reached a conclusion that democracy is essentially rule of elites. It reached a conclusion that democracy is essentially rule of elites through observing the phenomena of working of democracy. Through observing the phenomena of working of democracy. Next paragraph. However, the conception of radical democracy by C.B. Macpherson suggests the ideal conception of democracy to which both the liberal and socialist world should strive. Suggests the ideal, क्या लिखा तुमने? Suggests the ideal conception of democracy to which both the liberal and socialist world should strive. किस तरह से लिबरल और सोशलिस्ट वर्ल्ड को डेमोक्रेसी सोचनी चाहिए और चलानी चाहिए, ये सीबी मैकफर्सन ने बताया है अपनी रेडिकल डेमोक्रेसी में. 3-4 साल पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था रेडिकल डेमोक्रेसी का, इन्हीं का सवाल आया था. अब ये कब लिख रहे हैं? ये 1970s में लिख रहे हैं. इनकी जो थ्योरी है वो कंटेम्प्रेरी हमें आएगी, बट इन्होंने बहुत ज्यादा बातें प्रिस्क्रिप्शन की है, तो हम कहेंगे इस थ्योरी में हैवी नॉर्मेटिव बायस है और दिस इज हैवीली एज पर द क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, ऐसा बोलेंगे इनके लिए. ठीक है. पहले में क्या कहा? एलिटिस्ट में क्या कहा? एलिटिस्ट ने देखा तो कहा डेमोक्रेसी क्या है? एसेंशियली रूल ऑफ एलिट्स. तो उन्होंने देखकर जो बताया वो मेरा एम्पिरिकल असेसमेंट से आया, और इन्होंने कहां जाना चाहिए उसकी बात की, तो ये मेरा बना
प्रिस्क्रिप्टिव या नॉर्मेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। ये समझ आता है? ये पॉलिटिकल फिलोसोफर में क्लासिफाई हो जाएंगे, जो एलिटिस्ट थ्योरी बताते हैं वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट में क्लासिफाई हो जाएंगे। ये समझ आता है? इस तरीके से हम किसी को पॉलिटिकल फिलोसोफर कह देते हैं, किसी को पॉलिटिकल साइंटिस्ट कह देते हैं, डिपेंडिंग ऑन उनकी पॉलिटिकल थ्योरी में बायस इंपेरिकल ज्यादा है या नॉर्मेटिव ज्यादा है। दोनों पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। अगेन generally the ancient ones are philosophers, yes, but later we'll see वहां पर एरिस्टोटल ने कुछ इंपेरिकल थॉट्स के बेसिस पर भी बनाया था, ठीक है। तो इसीलिए उनको रादर फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोल दिया था हमने। बट द बेसिक आइडिया विच इज दैट साइंस इज रिलेटेड टू इंपेरिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ योर थ्योरी, वो अभी रिसेंटली ही हुआ है, बट उसके स्ट्रैंड्स वहां भी मिलेंगे, ठीक है। So blanket statements नहीं देंगे, ठीक है। Always the statements will never be blanket statements कि ऐसा हो गया, ऐसा है। No, there will be very few statements in the entire political science where we can conclusively say okay this is white, this is black, नहीं मिलेगा। In general perspective ऐसा रखेंगे, ठीक है। Next एक और लिखो। For George Sabine, very very important person. For George Sabine, anything related to politics, for George Sabine, write in inverted commas, anything related to politics or relevant to politics, anything related to politics or relevant to politics constitutes political theory, constitutes political theory. He is trying to define political theory and he is saying anything related to politics, anything relevant to politics, part of political theory, ठीक है। As of now sufficient. Next subheading you write political ideologies and the first is liberalism. Political ideologies, the first one is liberalism. Nitin is saying Indian federal structure with unitary feature. Good, good, good. Yes, exactly the same thing. Now if we see, talk about this political continuum, it's a political continuum in the sense that the more left you go, the more communist you become, the more right you come, the more fascist you become. What's the meaning? We'll talk about that. Conservative is towards right, socialist is towards left, okay. We'll be talking about this in detail. Again, from center you can go towards right. In center we will have some ideas, towards right we will have some ideas, and towards left we will have some ideas. If you see here, if we are in center, then we are saying in center some strands of liberalism and some strands of socialism are coming, but some strands of socialism are moving towards left, and if you move towards extreme left, we will not use socialism, we will use communism. Similarly, if you come towards right, conservatism is the least right you can be, और राइट जाना है तुम लिबर्टेरियनिज्म बन जाओगे, और फिर बहुत लेफ्ट राइट चले गए तो फासिस्ट बन जाओगे। ये तो अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं, यहां प्रॉब्लम आ जाती है। एक्सट्रीम राइट पे मत चले जाना। आज की डेट में तुमने सुना होगा रिसेंटली द इलेक्शंस गोइंग ऑन इन यूरोप, एंड वहां पे अगर तुमने सुना हो राइज ऑफ फार राइट, स्पेशली इन फ्रांस, मैरिन ले पेन, वो किसको हरा रही हैं?
मैक्रॉन कहां पर आते हैं? इमैनुअल मैक्रॉन, फ्रांस के प्रेसिडेंट, वो यहां पर आते हैं सेंटर में। मेरिन ले पेन राइट पर आती है। कुछ कहते हैं कि वो फार राइट पर आती है, वो इधर चली जाती है। देखेंगे इनके क्या आइडियाज हैं, इनके क्या आइडियाज हैं, इनके क्या आइडियाज हैं, फिर तुम्हें जो पसंद आएगा फिर हम तुम्हें वहां डाल देंगे। Again, all these things are used very loosely, but the moment you say far right, what is the meaning? Is it only assertion of ethnic identity, or is it assertion of ethnic identity along with incitement to violence? Getting my point? People will call it differently, but we'll define it academically what it is. But generally what you see in the political sphere, the slogans or the media using, those terms are actually used very loosely. They might not be the right way of putting it. She'll not say she's far right. She'll not say. BJP ये थोड़ा कहती है मैं rightist हूँ. हम कहते हैं. Why? By looking at the policies. So don't get carried away by that. We'll be defining them clearly. Good part is the more right you come, the more inegalitarian you become. What is inegalitarian? Anyone? Okay. Let's talk about this also. Inegalitarian. Let's say this is the seat of the presiding officer. Let's say this is my parliament. Okay. Let's say this is Lok Sabha. Now, sorry, this is presiding officer. In case of Lok Sabha, presiding officer is speaker. To the right of speaker, who will sit? ठीक है, ruling party or government, and to the left will sit opposition. From opposition you can come and you can meet Modi ji. हो सकता है ऐसा? राहुल गांधी जी यहां से चलेंगे, यहां पे मोदी जी को मिल लेंगे. From the perspective of speaker, right, left. Right used to be those people who used to sit on the right of the king. King is here. People who are supportive of the policies of the king used to sit on right. People who are opposing or questioning the policies of the king used to sit on the left. वहां से आइडिया आया राइट और लेफ्ट का. Now, if you are supportive of the king or his policies, that means you are going to make the king, you are interested in giving more powers to king. Today we say you are interested in giving more powers to state. If you are interested in giving more powers to state, you are right. If you are interested in giving more powers to individuals and taking power away from state, you are left. One element of right and left. Right and left में कैसे देखेंगे? आपकी political inclination, आपकी social inclination, आपकी economic inclination, इन सब को देख के we'll try to classify you. But if your political inclination is that the state should be stronger, or during that time the king should retain more power, then you are rightist. If not, leftist. The more you are supportive of what the king says or what the king does, the more you are saying that there is less need for change. Why? The king is not going to accept the fact that okay, you remove me and then establish a republic, get a new head of the state. King will say no. What will do? On the basis, hereditary basis, the power will keep on transferring. King तो ये बोलेंगे ना, if I want to understand that how should we determine succession, who should become the king? His son or somebody who is meritorious.
That order used to say your son. The king will say my son. If you believe in this, you are believing in the established order. How things are, you are becoming status quoist. But on the contrary, if you are questioning this and you are saying no, the power should not go from king to his son, but rather let's have a republic whereby let's elect a person and let's make him the head of the state. That is, you are trying to change. Left trying to change, right status quoist. राइट क्या कहेगा? स्टेटस क्विस्ट, जिसको आपने कल ट्रेडिशनल या कंजर्वेटिव भी बोला था, वो राइट पे आते हैं. नो, नॉट नेसेसरली. नहीं, ये कंसेप्शन नहीं है, इसको ठीक करेंगे. अगेन वी विल नॉट सिंपली से दैट you are right, you are left. The problem is nobody is entirely left, nobody is entirely right. But still, we'll talk about that later on. The point is, this is the genesis of the entire idea. Now, we are going to constantly struggle in this fact that one hand side we have society. Now, this triangle is also going to be our main way of analyzing things. One hand side you have human and the other hand side you have state. You are giving this human what? Rights, and you are giving the state powers. Now, the moment I come up with the law which gives some power to the state, the problem is I at the same time associate it with dilution of rights. State is having the power to curb your freedom of speech and expression because there is section 124A in IPC, sedition. लॉ है तो स्टेट के पास पावर है, तो वो क्या कर रही है? तुम्हारे राइट्स को कर्ब कर सकती है. अगर लॉ ही नहीं होगा, क्लासिकल लिबरल ये कहते थे ज्यादा लॉ बनाओगे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाओगे, कम लॉ होंगे कम रिस्ट्रिक्शन, कम लॉ ज्यादा लिबर्टी. पीटी का क्वेश्चन कुछ साल पहले आया था. कम लॉ होंगे ज्यादा लिबर्टी. क्यों? जैसे ही लॉ बनाते जाओगे ज्यादा, उन लॉज में तुम इनको रिस्ट्रिक्ट करते जाओगे. अगर सेक्शन 124A हो ही नहीं, सेक्शन 124A आई होप यू नो, आईपीसी, सेडिशन लॉ, देशद्रोही, एंटी नेशनल, यही लगाते हैं. ये वाला सेक्शन लगता है, कन्हैया कुमार, उमर खालिद, तो ये लगा देंगे उन पर. डिमांड क्या है? हटा दो, रिपील ही कर दो इसको पूरा. अगर लेट्स से इफ इट गेट्स रिपील्ड, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द लीगल डायमेंशन एज ऑफ नाउ, वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट इट इज डूइंग विद रिस्पेक्ट टू स्टेट पावर एंड इंडिविजुअल राइट्स. द मोमेंट दिस इज टेकन अवे, रिपील्ड, you are reducing the state power, which will improve the exercise of your rights. I will constantly talk about this. Now, if I am saying we are supportive of what the king is doing, that means we are supportive of what the state is doing. So, state is bringing laws, we are agreeing to that. The moment we are agreeing to the things which are being done by the state, that time we are also agreeing to greater power of स्टेट. राइटिस्ट देखना ज्यादा पावर देंगे स्टेट को, लेफ्टिस्ट हमेशा कहेंगे स्टेट की पावर को कम करो. व्हाई? द आइडिया इज दिस. यहां से आएगा. नाउ लेट्स रिलेट egalitarianism. If you are on this side, you are saying let the things be how they are because this is how the king is doing things. Then that order which was established, कोई प्रिविलेज्ड है, कोई अनप्रिविलेज्ड है, इनइक्वालिटी है. तुम क्या कह रहे हो? ये ठीक है. तुम ये कह रहे हो ना, ये ठीक है. द मोमेंट यू से दिस इज फाइन, दैट मीन्स यू आर सेइंग यू आर बिकमिंग इनइगैलिटेरियन. तुम राइट पे आओगे तो तुम वो सब जस्टिफाई करोगे जो पहले था, और क्योंकि पहले जो था वो अनइक्वल था. इगैलिटेरियनिज्म का मतलब होता है इक्वल सोसाइटी. इक्वल सोसाइटी यहां इक्वल नहीं होगी,
पहले इक्वल कहाँ थी? इक्वालिटी तो अभी आई ना, रिसेंट है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। उससे पहले का ऑर्डर अनइक्वल ऑर्डर। यू आर सपोर्टिव ऑफ दैट? आर यू सपोर्टिव ऑफ किंग? राइट, नॉट लेफ्ट। ये समझ आता है? तो राइट पे होगे तो इनइगैलिटेरियन, लेफ्ट पे होगे तो इगैलिटेरियन। ये समझ आता है? यहां से हम डिराइव करते हैं ये सब आइडियाज को। स्टार्ट कहां से हुआ? तुम किस साइड बैठते हो, इस साइड बैठते हो या इस साइड बैठते हो। यहां कौन बैठता था? नोबल्स होते थे जो सपोर्ट करते थे किंग को। अब उनको तो प्रिविलेज है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ोगे, एक प्रिविलेज्ड सेक्शन था, एक अनप्रिविलेज्ड सेक्शन था सोसाइटी का। प्रिविलेज था, क्लर्जी थी, उसमें क्लर्जी आती थी, रिलीजियस लीडर्स, ये जो इन्फ्लुएंशियल रिलीजियस लीडर्स हैं, यहां बैठेंगे ना, ये गठबंधन में चलेंगे हमेशा स्टेट के साथ। इनके पास तो अगेन इनका तो चल रहा है ना, अच्छा, ये क्यों बदलेंगे सिस्टम? बदलेगा कौन सिस्टम? जिसके पास पावर नहीं है। ठीक है, तो वहां से राइट एंड लेफ्ट आया, वहां से ही आया कि राइट पे जितना ज्यादा जाओगे स्टेट की पावर उतनी बढ़ाओगे, लेफ्ट पे जितना जाओगे स्टेट की पावर उतनी कम करोगे। राइट पे जितना आओगे दैट मीन्स कंजर्वेटिव बनते जाओगे, लेफ्ट पे जाओगे तो कंजर्वेटिव कम बनोगे या नहीं बनोगे। अब क्या लेफ्ट पे जाओगे तो तुम लिबरल हो या रेडिकल हो, उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है, या सोशलिस्ट हो। पर राइट पे अगर आओगे तो कंजर्वेटिव हो, या बहुत राइट पे आ गए तो फासिस्ट हो। वो उसको लाएंगे, बीच में लाएंगे। नो, अगेन एब्सोल्युटली लेटर ऑन वील से वो वेलफेयर स्टेट आज की डेट में है। हम बात कर रहे हैं जब ये आइडियाज आए थे, ठीक है, तब कैपिटलिज्म नहीं आया है अभी। नो नो नो, ओके, क्लासिकल लिबरल्स एंड मॉडर्न लिबरल्स और सोशल लिबरल्स, वील कॉल देम सोशल लिबरल्स, ठीक है। सो वेरी बेसिक ऑफ right, left and center, we'll build on this. Okay, now let me come to this. When we talk about liberalism, then this time period to the closing times of the 19th century, something called classical liberalism is going on. Towards the end of the 19th century and the starting of 20th century, you have something called as modern liberalism coming up. Let me make it more easier. Liberalism and types. Are you finding the pace too fast? ज़्यादा तो नहीं है स्पीड? समझ आ रहा है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मोहित, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, all are considered equal in egalitarian society. Good. Egalitarian society as of now equal society. बाद में कहेंगे equal हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। इक्वल कैसे? सोसाइटी में इक्वल, नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, विल गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग इकोनॉमिक डोमेन में भी इक्वल, इक्वल इनकम्स। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। सबकी इक्वल इनकम हो सकती है? बस ये लड़ाई है सोशलिज्म और लिबरलिज्म की। क्या सबकी इक्वल इनकम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए या लैंड रिफॉर्म कर दें? गोलकनाथ केस कर लिया है? सुना है गोलकनाथ केस के बारे? गोलकनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब 1967 केस। हैव यू हर्ड अबाउट इट? गोलकनाथ, गोलकनाथ कौन थे? कितनी लैंड थी पता है उनके पास? गोलकनाथ के पास 500 एकड़ की जमीन है। पंजाब सरकार कह रही है 470 एकड़ हमें दे दो, बाकी तुम रख लो। और वो क्या है? सरप्लस लैंड। हम क्या करेंगे? बांट देंगे। गोलकनाथ गुस्सा हो गया। गोलकनाथ कह रहा है हमने इतनी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन के बाद इतनी जमीन इकट्ठी की और अब स्टेट कह रही है ले जाएगी। लिबरल कंट्री नहीं होने देगी ये। क्यों? उसके लिए
फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है लिबरल के लिए. सोशलिस्ट करेगा अरे समाज का सोचो, लो इससे सबको दो. सोशलिस्ट, वो लिबरल. तुम क्या हो? सोचते रहना तुम क्या हो, क्योंकि थोड़े दिन के बाद मैं तुमसे पूछने वाला हूं कि तुम कहां पे अपने आप को क्लासिफाई कर रहे हो. लिबरलिज्म एंड टाइप्स. द फर्स्ट इज क्लासिकल लिबरलिज्म. This is the main idea which starts liberalism. Then, because of certain problems in classical liberalism, we have the arrival of modern liberalism. After that, we have the emergence of neoliberalism. After that, the most recent ones, we have the emergence of social liberals. This is how liberalism has progressed. Okay. Now, classical liberalism, the ideas prevalent in 17th, 18th and certain part of the 19th century also. Okay, but 17th century, 18th century. Modern liberalism coming up later part of 19th century and early 20th century. Neoliberalism after 1970s till the present times, and social liberals we can say after 1980s to 1990s till the present times. This is how the transition has happened. Okay. Classical liberals, modern liberals, neoliberals and social liberals. We'll study each of them and we'll see the nuances, how they have changed. So classical liberalism is the one which is challenging the feudal ideas. Feudalism, monarchy, the unequal society, the privileged sections or unprivileged sections which existed before the coming of classical liberals. They are going to be the first ones who are going to challenge the established system, and they are the ones who are exposed to the enlightenment ideas the first, the classical liberals. Yesterday I gave you some names also, I think. John Locke, right? Thomas Jefferson, Adam Smith, they are classical liberals. Okay, later on we'll introduce modern liberals also. So first, now these all four schools of thought within liberalism, they all will have their own conceptions with respect to the nature of man, with respect to what the society is, with respect to how the state should be, and with respect to the economic and social policy. सबकी अपनी अपनी different होगा. Who is man? Man is self-interested, man is competitive, man is cooperative, man is selfish, man is brutal. What is the nature of man? What do you think? What is the nature of man? Mixture of everything. यार ये तो पतली गली से निकल गया तुम. Mixture of everything मत क्या? कैसे लगती है तुम्हें अगर डिफाइन करने को कहा जाए ह्यूमन नेचर कैसी है? Competitive, cooperative, I'm giving you words. Selfish, self-interested, benevolent, self-obsessed. Very good. Okay, self-obsessed है इंसान. Self-obsessed तो बनेगा ना, बाकी सारी प्रजातियां है ना. देखो हम अब मैक्रो लेवल पर सोचेंगे, ये छोटे मोटे कंपैरिजन नहीं करेंगे हम कि हाँ दिल्ली का कंपैरिजन बॉम्बे के साथ नहीं, या फिर इंडिया का कंपैरिजन अमेरिका के साथ नहीं. हम इससे बड़ा कंपैरिजन करेंगे. पूरे प्लैनेट पर वी आर पार्ट ऑफ दैट स्पीशी विच हैज कॉग्निटिव एबिलिटीज, है ना. तो हम कह रहे हैं कछुए तुझे क्या आता है, दौड़ भी नहीं पाता तू. Nature of man, everybody will define nature of man differently, and there is no consensus on what's the nature of man. And the
the most beautiful aspect of human existence is the subjectivity associated with the human being, is the various characteristics associated with the human being. Nevertheless, despite their variation in terms of what man is, what kind of society is, what the state is, and what the economic and social policy is, there are some characteristics which are similar to all of them. Why we are calling all these four schools of thought under the larger category of liberalism is because all four of them are going to commit themselves to the idea of liberty. For them, liberty is the most important political ideal. Liberty will come first, always first, never second. Liberty is the most important conception for them as far as the human beings are concerned. Socialists will not say the same. Liberals will say liberty is more important because for them individual is the most important entity in our conception of individual, state and society. Some will say this is more important, some will say this is more important, some will say this is more important. Liberals are saying it is the human beings. Now, what do we call this phenomena where the individual is at the center of the entire inquiry which is conducted by us? This phenomena is called as individualism. Individualism. Are you an individualistic person or are you a collectivist person? Do you think individual is the most important entity on the basis of which we should do our entire political theory, or is it society or community which is more important and on the basis of that we should do our entire political theory? Liberals will say individual. Before liberalism, it has always been the case that either this or this was important. Liberalism is saying no, shift the focus from state, shift the focus from society, bring it to individual. Which brings us to the next topic, right? Main assumptions of liberalism. You have to write. Main assumptions of liberalism. First, do one thing, एक काम करते हैं, मेन assumption से पहले एक इंट्रोडक्शन टू लिबरलिज्म लिखो. Introduction to liberalism. Some words after that we'll write main assumptions. First write introduction to liberalism. Right. So do one thing before we move forward. Whatever I am writing here, what you can do is make a margin on the right hand side and maybe note it down there so that the dictation part is in continuity. It will be easier for you. Just one suggestion, obviously you can do as per whatever you are comfortable with, or what you can do is maybe towards the end of your notebook you can make all these things, whatever we are writing on the board, and maybe from the starting of the book you can have the dictation, whatever you want to do. Or if you want to do it this way, that on one page dictation, on the other side of the page the write-ups which will be given as a part of my annotations, your choice, absolutely your choice, so that you have a certain way in which the content is being taken down, because we'll be writing a lot of things and I'll be expecting that in these notes, if you have to add something, but let these notes be your main area of study for the long term. We'll be writing a lot of things, be prepared that we'll be filling 3 to 4 copies. ठीक है, चलिए लिखिए. Right, introduction to liberalism. The central feature of liberalism is the commitment to individual. The central feature of liberalism is the commitment to individual and the desire to construct
and the desire to construct a society in which people can satisfy their interests and achieve fulfillment. Continue, same paragraph. Liberals believe that human beings are rational creatures. Liberals believe that human beings are rational creatures which can take independent decisions for themselves. Next paragraph. As a political ideology, liberalism emerged in the ideas of John Locke. As a political ideology, liberalism emerged in the ideas of John Locke and it started finding practical relevance in the 17th and 18th century AD. In the 17th and 18th century AD. Full stop. The English, American and the French revolutions were heavily inspired by the ideas of liberalism. English, I assume that you know about the American Revolution and French Revolution. Are you aware about the English Revolution also? When English Revolution took place and what was the main idea? The main idea of English Revolution, 1688, it is called as the Glorious Revolution. The basic aspect of revolution is that the power shifted hands from the monarch to parliament and Britain became constitutional monarchy. 1688, Glorious Revolution. मोनार्क से पावर हटा के पार्लियामेंट के हाथों में आ गई थी. आज की डेट में हम कहते हैं यूके इज अ केस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी. सुना है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का नाम? क्या होती है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी? नो वन इज अबव द पार्लियामेंट. लक्ष्मीकांत लिखती है पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट चेंज अ मैन टू वुमन एंड अ वुमन टू मैन. लक्ष्मीकांत लिखती है, जाकर पढ़ना. सब कर सकती है पार्लियामेंट वहां की. यहाँ की पार्लियामेंट कर सकती है इंडिया की? क्यों? फंडामेंटल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर है. वेरी गुड. यहाँ की पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट कहता है कुछ भी कर लो, बस बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते. उन्होंने कहा क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? सुप्रीम कोर्ट कहता हम बताएंगे जब दिल करेगा. ग्लोरियस रेवोल्यूशन. कंटिन्यू. Next paragraph. Liberals challenged the absolute power of monarchy
liberals challenged the absolute power of monarchy and criticized liberals challenged the absolute power of monarchy and criticized the political and economic privileges of the landed aristocracy. Aristocracy means aristocracy. Cracy is rule. यहाँ पे हम बदलते रहेंगे, plutocracy, theocracy, democracy, aristocracy. Aristocracy is basically ruled by elites. Generally they are rich. Okay. So landed aristocracy, full stop. They criticized the unfairness of the feudal system. In which social positions were determined by the accident of birth. Social positions were determined by the accident of birth instead of ability and merit. Full stop. They also criticized the absolute authority of church. So we'll use words like this: accident of birth. It's a natural accident where you are born. It should not determine what you get. How the resources have to be distributed, this should be on the basis of merit and talent. Creation of meritorious society is something which the liberal will say. Okay. Liberals in India will not like reservation. They will not like reservation. Those who have commitment to what? Later on I'll tell you. Those who have commitment to classical liberalism, they will not like reservation. Those who are social liberals, they will justify reservation. This is one of the distinctions. We'll come to that. Now you write main assumptions of liberalism. First is belief in individualism. First, belief in individualism, right? Individualism is the belief in the supreme importance of an individual. Individualism is the belief in the supreme importance of an individual over any social group, or collective body. Collective body means collective body can be state also.
Social group can be these are social groups, part of society. Religion is one social group, caste is another social group, race can be another social group, ethnicity can be another social group. Okay, so importance over this and collective body, that can be state, individual important. Continue. After full stop, a belief in the primacy of individual, a belief in the primacy of individual, underline primacy of individual, a belief in the primacy of individual is the central characteristic theme of liberal ideology. Is the central characteristic theme of liberal ideology. Continue. Same point, next paragraph. For liberals, comma, society is aggregation of individuals. For liberals, comma, society is aggregation of individuals who are driven by their self-interest, who are driven by their self-interest, next assumption, belief in freedom. Right. A belief in supreme importance of an individual, a belief in supreme importance of an individual leads naturally to a commitment to individual freedom. I'll repeat, a belief in supreme importance of an individual leads naturally to a commitment to individual freedom. ये समझ में आता है? Naturally. अगर ये supremely important है individual, तो automatically उसके साथ associated freedom भी आपके लिए supreme importance होगी. The word supreme is important. देखो, one important thing before we move forward, in political theory we'll be using some terms. तुम्हें लगेगा ये सिर्फ adjective है, adjective नहीं है. सुप्रीम इंपॉर्टेंस का रेलेवेंस है कि ये बाकियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सुप्रीम है इनके ऊपर. कल जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएंगे इस चीज को देख के बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो गोलकनाथ की जमीन उसी की रहेगी. ये इंपॉर्टेंट होता तो छीन लेंगे, तो छीन लेंगे. सो belief in freedom, I'll repeat, a belief in supreme importance of an individual leads naturally to a commitment to individual freedom. Continue. Individual liberty unites all liberals. Underline this, very, very important. Individual liberty unites all liberals. Third, belief in reason. Belief in reason. Right. Liberalism remains a central part of the Enlightenment project. Liberalism remains a central part of the Enlightenment project.
full stop. Enlightenment placed a heavy emphasis. Enlightenment placed a heavy emphasis on the ability of humans to reason. Enlightenment placed heavy emphasis on the ability of humans to reason. Full stop. Such reasoning is needed. Such reasoning is needed to overcome the bondage of superstition, ignorance, and the paternal authority of the king and church. And the paternal authority of king and church. Paternal authority, you understand? The authority which is basically given to your parents, that they are protective towards you, as a result of which they'll tell you what needs to be done. They'll say, you don't, अपना दिमाग मत चलाओ, हम बताएंगे. Why? Because they have this protective attitude towards you. But the problem is, when religion and state, they are exercising a paternal authority by considering the people as subjects and not citizens, that is when they may not respect the rights of the people. ठीक है, तुम्हारे अधिकार हैं कुछ घर के अंदर, है कुछ घर के अंदर अधिकार, या पेरेंट्स के अधिकार होते हैं तो तुम्हारे मार दिए जाते हैं. पैटर्नल अथॉरिटी जो होती है ऊपर से प्रोटेक्टिव होती है. उस प्रोटेक्शन में दे वुड वांट टू गेट थिंग्स डन देयर वे, बिकॉज दे फील दैट्स द राइट वे टू डू थिंग्स. इंडिविजुअल में अगर इंपॉर्टेंट है और इंडिविजुअल फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, तो लिबर्टी के साथ ये भी एसोसिएटेड है कि अब तुम अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो. अब ये मत आकर कहना कि मैंने यूपीएससी की तैयारी की है, अब पेरेंट्स को आकर नहीं कह सकते कि तुमने हमें डाला था. वो हम +1 में कह सकते हैं, वो कॉलेज जाते समय कह सकते हैं. अगर बिलीफ है चॉइस में, फ्रीडम में, कि हमने खुद से किया है, तो फिर कंसीक्वेंसेस भी तुम्हें ही हैंडल करने हैं. यू कांट पुट द ब्लेम एनीवेयर एल्स. दैट्स अ लॉट ऑफ पावर बट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. आर यू रेडी फॉर दैट? आगे देखना. फासिज्म आएगा, फासिज्म कहेगा ये तुमने बहुत ज्यादा फ्रीडम दे दी है, ये घबरा गए हैं. इस घबराहट में इन्होंने क्या किया, हिटलर को कहा तुम आगे बढ़ो, हमें तो समझ नहीं आ रहा, तुम ही बता दो. फासिज्म वाज सीन एज अ रिवोल्ट अगेंस्ट मॉडर्निटी. ये कहा गया, क्यों? ज्यादा ही फ्रीडम दे दी तुमने, इतनी फ्रीडम से समझ ही नहीं आ रहा करें क्या. बहुत सारा खाना आगे रख दिया, समझ ही नहीं आ रहा क्या खाएं, चुपचाप लो दाल चावल खा लेना. आइडिया है क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जब तुम्हारे पास चॉइस नहीं है तब तुम्हें चॉइस चाहिए, जब चॉइस मिल गई तब देखा भटक रहे हैं, तब समझ ही नहीं आ रहा डायरेक्शन क्या होगी. ब्यूटी ऑफ ह्यूमन नेचर. समझ ही नहीं आता क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, belief in justice, last point, and then we'll end the class. Belief in justice. Tomorrow we'll start with classical liberalism. Liberalism believes that all men are born equal. Liberals believe that all men are born equal. Full stop. They oppose irrational factors. They oppose irrational factors like religion, race, gender, caste. They oppose irrational factors like religion, race,
gender, caste in determining social privileges, in determining social privileges, full stop, they support equality of opportunity. They support equality of opportunity. ब्रैकेट में लिख लो, but not equality of outcome. But not equality of outcome. For liberals, what they are saying give everyone the opportunity. But once you give the opportunity, now the ability and talent will determine where you are in the society. But give opportunity to everyone. So if in ancient India women and Dalits were not given the opportunity, a liberal will say give them the opportunity. But even after giving the opportunity, if they are not able to make big in life, then this is not something where the state is concerned. This is the result of their own actions. The fact that I can't run, this is a discrimination. I should be allowed to run. The fact that I ran and then I came last, that is up to me. So that is what liberals want. Equality of opportunity, but not outcome. Later on we'll see socialists will talk about equality of outcome. सबको बराबर करो, गोलकनाथ की जमीन लो, सब में बांट दो. Socialist वो ये कहेगी. ठीक है, fine. Tomorrow we'll be starting with classical liberalism. We'll see the major assumptions. We'll start with this classical liberalism. Can someone tell me who is that guy? वो कौन है, कोई बता सकता है? ये कौन इंसान है जो कह रहे हैं द ओनली फेयर इज लाजेज फेयर? ओनली फेयर मतलब जायज क्या है? जायज क्या है? लाजेज फेयर. जायज क्या है? अकेला छोड़ दो मुझे, लीव मी अलोन. आना मत, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं. स्टेट के लिए यूज करेंगे. लाजेज फेयर स्टेट वर्सेस वेलफेयर स्टेट. क्लासिकल लिबरल्स क्रिएटेड अ लाजेज फेयर स्टेट बिकॉज फॉर देम this is the right thing to do. Done. Adam Smith, very good. ये है Adam Smith भाई, father of economics. Classical economics भी बोल देते हैं. Classical liberal हैं, classical economics relate करेंगे. So liberalism wholly depends on meritocracy. Absolutely. Later on we'll see how liberalism will incorporate social justice and they will to a certain extent give up on merit also. But that later on. Yash is saying liberals want minimal government. Absolutely. It comes from the same idea. Mohit, these assumptions you told are also integral part of ancient Indian philosophies like Buddhism and Jainism. Okay. Yes, absolutely. The only thing is we'll not let's say to a certain extent Buddhism and Jainism, they are also talking about the secular elements of creation of, let's say, rules and regulations. They are also talking about that we don't have to go towards God and from there get the authority. Let's apply reason and then we can come to these kinds of ideas. Absolutely. But Buddhism and Jainism per se may not talk about equality of opportunities. For example, in Buddhism, women were also allowed to enter the sanghas. So equality वहां भी थी. But were they given the opportunity to become a monk? वहां बात करेंगे किस हद तक है. ठीक है, अब लिबरल तो आ गए, वो बात और है. लिबरल्स आए थे, लिबरल्स दे गॉट द अमेरिकन रेवोल्यूशन, द पीपल देयर दे गॉट इंप्रेस्ड, देन दे क्रिएटेड अमेरिका. बट क्या अमेरिका जो बना उसने क्या ये सारी assumptions को इनकॉर्पोरेट किया? क्या उन्होंने ब्लैक्स को ये दी? वो बात और है, ये आइडिया है अभी. बट इनमें से कुछ आइडियाज लगाए उन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये था, ये उन्होंने लगाया, ये नहीं दिया. बट इंस्पायर्ड यहीं से पूरा का पूरा रेवोल्यूशन. ये समझ आता है? गुड. We'll end here today. Tomorrow we'll continue with classical liberals. We'll see
the philosophical the philosophical inspiration for the classical liberals क्या थे. क्लासिकल लिबरल्स कल हमारा हो जाएगा बड़े इजीली. उसके बाद tomorrow we'll go towards modern liberalism also, that what were the problems with classical liberals which gave rise to modern liberalism. If that is also something which we are able to finish, new liberals also will bring. वहां तक एटलीस्ट आ जाएंगे. नहीं, मॉडर्न है, मॉडर्न है. ठीक है, थोड़ा सा टाइम रुको, वो क्लियर हो जाएगा तुम्हें. 20th सेंचुरी में जैसे ही एंटर करेंगे ना, वेलफेयर स्टेट बनाएंगे. तो वेलफेयर स्टेट में क्या है, राइट भी जस्टिफाई करता है कि स्टेट जाओ वेलफेयर करो, लेफ्ट भी जस्टिफाई करता है कि स्टेट जाओ वेलफेयर करो. बट राइट अभी भी कहेगा ज्यादा पावर स्टेट को दो, लेफ्ट अभी भी कहेगा कम पावर स्टेट को दो. स्टेट को कम पावर देना doesn't mean that we are saying state you should not come and do welfare. Two different things. स्टेट को ज्यादा पावर देने का मतलब क्या है, ऐसे लॉज बनाने जिससे ह्यूमन बींग्स की लिबर्टी कैन बी कर्टेल्ड. बट दूसरी तरफ आप कह रहे हो स्टेट का इंटरवेंशन, कि आप जाओ और लोगों को लाइवलीहुड दो, एमजी नरेगा, या आप जाओ और एजुकेशन दो, आरटीई, या आप जाओ और लोगों को लेट्स से फूड ग्रेन्स दो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. ये नहीं मना कर रहे, ये नहीं मना कर रहे. यहां पे अलग आइडिया आएगा. नियो लिबरल्स कहेंगे स्टेट इतना तुम्हें आने की जरूरत नहीं, राइट एंड लेफ्ट की बात नहीं आएगी. फिर ये देखेंगे नियो लिबरल कहां आ रहा है. अभी तक जो हमने राइट एंड लेफ्ट कहा है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू स्टेट पावर, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू स्टेटस क्विज्म. टुमारो विल इंट्रोड्यूस न्यू एलिमेंट्स टू दिस. और जो आप कह रहे हो ना, वो दो अलग चीजें. आप कह रहे हो वेलफेयर, वेलफेयर अलग चीज है. वेलफेयर एंड स्टेट पावर आर टू डिफरेंट थिंग्स. वेलफेयर तो आज की डेट में हम सब कहेंगे, राइटिस्ट लेफ्टिस्ट सब कहेंगे वेलफेयर तो करनी पड़ेगी. ऑल्दो राइटिस्ट कहेगा कम करो, वेलफेयर लेफ्टिस्ट कहेगा ज्यादा करो. वो क्यों? क्योंकि वेलफेयर की जरूरत किसको है ज्यादा, जो यहां है. वो क्यों यहां है वो भी बताऊंगा. जब सोशलिज्म लाएंगे तो लेफ्ट को लेकर आएंगे पूरा, कि वर्कर आ गए, लैंडलेस लेबरर्स आ गए, वो लेफ्ट पे है. लेफ्ट किनके लिए लड़ाई करता है? इनके लिए लड़ाई करता है. राइट क्या कहता है? नहीं नहीं, जैसे चल रहा है चलने दो. तो हम कहेंगे राइट किसके लिए लड़ाई कर रहा है? जमींदार के लिए कर रहा है, प्रिंसली स्टेट के लिए कर रहा है. जो चल रहा है चलने दो. वहां से आता है वो. There's a question. After the question, we'll end the class. Sir, if a contract is made between two entities without any use of force and with their consent, okay, can the government come in between to judge the fairness of the contract according to liberal ideas? No. According to classical liberal ideas, government should not come. The government should not come, but not according to the ideas of social liberals. They will allow this intervention. If two parties are saying that we are agreeing to something, then it is as part of their liberty. दोनों की लिबर्टी है, दोनों पास आए, दोनों ने रूल बनाया, दोनों उससे चला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. द प्रॉब्लम कम्स वेयर दिस रूल इज डेरोगेटरी. खाप पंचायत आ गई. खाप पंचायत डेमोक्रेटिक है, सब मान रहे हैं, मिलके मार दो. है तो डेमोक्रेटिक, सबने माना, बट प्रॉब्लम क्या है? मारना गलत है. अब यहां पे क्या कहूंगा, स्टेट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? एक तरफ तो तुम कह रहे हो डेमोक्रेसी. सर, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? कंसेंट से डिसीजन लेना. सबने कंसेंट से कहा मार दो. खाप पंचायत में यही होता है. खाप पंचायत पता है ना, व्हाट इज खाप पंचायत? कंगारू कोर्ट्स. गांव का लड़का, गांव की लड़की दूसरे गांव के लड़का या लड़की से शादी करना चाहते हैं. खाप पंचायत क्या कहेगा? पनिशमेंट इज डेथ if you go for something like this. And they have given it also. People have died in India also. खाप पंचायत. एक आर्ग्यूमेंट आता है, खाप पंचायत तो डेमोक्रेटिक है, सारे गांव, पूरा गांव मिलके कह रहा है ठीक है, अब क्या करूं? अब डेमोक्रेसी को मैं ये नहीं कहूंगा कि अब यहां पर डेमोक्रेसी क्या बन गई? टिरनी ऑफ मेजॉरिटी. मेजॉरिटी ने तो अपनी, अगर मेजॉरिटी ही गलत है तो क्या करूंगा? तो डेमोक्रेसी कैसी हुई? क्या डेमोक्रेसी सिर्फ
मेजॉरिटी की से है या डेमोक्रेसी सही से भी है? रूल ऑफ लॉ, लॉ भी फेयर होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. Any government in power which is rightist or opposition government leftist? No, 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 no. Government in power नहीं, party in power you mean to say. पार्टी जब भी कोई पावर में आएगी तो वो सरकार बन जाएगी. सरकार बन जाएगी तो वो चीजें क्या करेगी? अपने अकॉर्डिंग चलाएगी. हो सकता है अपने पास ज्यादा पावर रखे, हम कहेंगे इस समय वो राइटिस्ट है. जब वो ऑपोजिशन में बैठ के जाकर बैठ जाएंगे तो क्या बीजेपी लेफ्टिस्ट बन जाएगी? ये कहने का मतलब नहीं है. कहने का सिर्फ मतलब ये है कि जब हम इस कंसेप्शन को डिवाइस कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं जो भी राइट पे बैठता था वो किंग की बातों से एग्री करता था और लेफ्ट पे बैठने वाला अपोज करता था. आज की डेट में भी ये तो पार्टी है, देखो ये तो चेंज हो जाएगी. पर अगर यहां पे जो भी बैठेगा वो किसको ज्यादा पावर देता है? इसको. तो मुझे प्रॉब्लम है. बीजेपी आई, बीजेपी चली गई, कांग्रेस आई, कांग्रेस ने भी क्या किया? लॉ में बदलाव कर दिए इस तरीके से कि इसको ज्यादा पावर मिल गई. वी आर नॉट कंसर्न्ड विद पार्टीज, वी आर कंसर्न्ड विद द इंस्टीट्यूशन, कि इस इंस्टीट्यूशन के पास ज्यादा पावर चली गई. तो ये जो इधर बैठे थे वो कहते थे इंस्टीट्यूशन के पास कम पावर होनी चाहिए. उस समय इंस्टीट्यूशन किंग, अब इंस्टीट्यूशन स्टेट. तो राइट एंड लेफ्ट की कंसेप्शन को वैसे देखो. अगर बीजेपी कल पावर में नहीं है तो यहां बैठेगी तो क्या लेफ्टिस्ट हो गई? नो, दिस इज नॉट हाउ इट इज. वील सी बीजेपी की कमिटमेंट किस किस चीज को लेकर है. क्या बीजेपी ये कहती है कि स्टेट की पावर की ये वाले लॉज हटा दो? तो उस टाइम मैं कहूंगा हाँ, दे आर प्रो चेंज. या वो ये कहती है कि नहीं नहीं नहीं, आपसपा लाओ, आपसपा को स्ट्रांग करो. क्या कहती है? वहां से मैं निकालूंगा राइट या लेफ्ट. ठीक है. तो पहली बात तो ये कहना गलत होता है कि ये लेफ्टिस्ट है और ये राइटिस्ट है. स्ट्रैंड्स होते हैं सब में. कोई स्ट्रैंड होगा लेफ्ट वाला, कोई स्ट्रैंड होगा राइट वाला, और हम अपनी एनालिसिस के लिए टू मेक थिंग्स इजियर वी लेबल देम एज लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट. दैट इज नेवर द केस, नेवर, कभी भी नहीं होता वो. ठीक है. चलो इससे ज्यादा बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे. अभी लेट दिस बी. ओके ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, लेट्स मीट टुमारो, विल कंटिन्यू द डिस्कशन. आई विल सेव दिस and tomorrow you will get a glossary of terms also. Some terms which are difficult, I'll keep on giving this glossary on a few, let's say after a few days, and you can just start reading it and start absorbing it धीरे धीरे. ठीक है. चलो, thank you so much everyone.